Good evening, everyone. We are just about to begin. Good evening, everyone. I am Ayush Sharma, an undergraduate BTech second year from Computer Science and Engineering branch, also an executive board member at CodeChef MMMUT chapter. And I'm Mansi Pandey, a second year student pursuing Bachelor of Technology in Electronics and Communication Engineering and an executive member of the CodeChef MMMUT chapter. And we are thrilled to welcome you to today's webinar on mastering competitive programming. We have a very special guest with us, Abhinav Avasthi sir, a renowned expert in the field of competitive programming. We are truly honored to have you with us today. So let us quickly run a little background check about our erudite guest. He is an SD intern at LinkedIn, an expert at Codeforces, and an ICPC regionalist holding rank 57. Enough for me. Now let's dive right into our informative session and start with some questions to kick things off. So, sir, my first question from you is, could you please tell us a bit about your background and experience in competitive programming? Yeah, uh, sure, Ayush. Thanks. First of all, thanks guys for inviting me for this session. Yeah, so about my background and the whole journey for CP, I too started. I'm from HBTU. I too started like from my first year. Okay, so first year में in our college there was a CodeChef का coding contest, I guess, which were organized by my college CodeChef chapter. So that was my first contest that I've given in my first year, I guess, first semester, and that was really interesting to me. I found some interest in CP, okay, because how we solve problems, how we participate, and everything. After that, from my second semester, I started competitive programming on CodeChef and Code Courses, right? And it took me around 1 year or 1.25 years to be a five-star at CodeChef and expert at Code Courses. And then I joined Geeks for Geeks also as a TSM intern, right? So that was my journey. In these 1 years, it was like a lot of ups and downs happened. There was a point when my rating was not increasing. There was a point when I was not able to solve problems. But we will discuss about all how to tackle that points, how to keep practicing, how to keep motivated. So the very first thing is to be motivated to do this, because the thing is people do a great when they are in the comfort zone, but we have to come out of our comfort zone. Let's say there's a contest, and in that contest you are solving two problems, you're not able to solve third problem, means that is out of your comfort zone. So you have to solve that, try to solve that. Maybe after the contest try to solve that. But that is what people do mistake. I found this thing very helpful in my journey. I have solved the questions, practice more questions, and this is how I got some good rating in these platforms. Yeah. About then, I guess the last year when I was in my third year last, that then they was ICPC. So when I participated in my second year in ICPC, I was even not selected for my college. That was like that time I've just started CP. It's just been say 3-4 months I started. And then in that whole 1 year I was doing lot of contests. I've participated in more than 100 contests in code forces, around 100 contests in code forces, around 30-40 contests in code chef. So after that whole 1 year preparation, practice, giving contest, the next year when I participated in ICPC, I was qualified for the regionals with a rank of 57, right? So this clearly shows how important practicing and regularity is, right? That was about my background basically. Thank you, sir, for sharing your background and experience in competitive programming. It's truly impressive.
So competitive programming is all about honing problem-solving skills and algorithmic thinking. For beginners in the audience, what advice or steps do you recommend for getting started with competitive programming? And are there any common mistakes that they should be aware of? Right. So first of all, I will discuss about mistakes, what people do. So see what CP is. CP competitive programming is totally problem solving, thinking ability, your approach how to solve a problem. Okay, that is what there is in CP, and that is what which is also asked in coding rounds in technical interviews of good companies. Right. If you will take any good company, even in LinkedIn when I my interview was there, everyone starts from that only. Everyone starts from DSA. The first round is of coding round, which involves DSA. First round is technical round, which involves DSA. So why this all is very important? Why this CP and so when I'm saying DSA, when I'm saying CP, so what's the difference between CP and DSA? So see, the thing is, CP is more specific on like time bounded, right? When you appear in a contest, you're time bounded. Okay, in 3 hours you have to solve these problems. The problems will also be solving good efficiency. Time should be low so that it should not give any error, right? So for the beginners, I will also only advise start with CP, and in the start obviously you will face some difficulties. It's not like that you will not face difficulties. Even if you see my code first exam, right, in the first 4 5 contests I was not able to solve a single problem. Then slowly you have to improve. Okay, then I started solving one problems per contest and two problems. Then slowly we increase. Okay, it's not like a okay just in 15 days you can be 5-star expert. It's not like that. It's being takes years to be at that level. So don't worry, it will take time. What juniors think, what beginners think, they try for maybe 1 or 2 months, then they feel okay, I can't do, I'm not able to do, I'm not able to reach a good level. At least give some time. I will always say that CP is not compulsory. Okay, I will always say, but DSA and problem solving is very compulsory, and CP is a good way to understand and practice DSA. Take CP as a way of practicing DSA. Maybe your rating is not increasing, maybe your stars are not increasing, maybe you are at the same rating from last some month, but if you are practicing, if you are giving your best, that is the main thing. That is why we do CP. CP का as such मेरी rating का कोई फायदा नहीं है. In LinkedIn, no one asked me, are you 5-star on code step? Are you expert on code forces? No, no one is going to ask. No one is worried about am I a ICP series or not. They are checking your problem solving skills, and that is why you are doing CP. Don't do CP for increasing your rating. Do CP to improve your problem solving, right? So, and second thing for beginners is don't just learn or read the concept, practice it. CP and DSA both are all about practicing. What problem is ना currently क्या होता है कि first और second year students, they go to a website, they go to a channel, वो कोर्स खरीद लेते हैं या फिर वो YouTube पे एक किसी चैनल को फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं. द प्रॉब्लम दैट पीपल डू इज कि वो नोट्स तो बना रहे हैं, वो कोर्स तो देख रहे हैं, वीडियोस तो देख रहे हैं, बट वो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं. तो सीपी में या डीएसए में दोनों ही में आपका 30% पार्ट जो होता है ना वो लर्निंग का होता है. 70% पार्ट इज अगेन प्रैक्टिसिंग. तो अगर आप प्रैक्टिस, आप भाई आप मैथ्स पढ़ते थे, ठीक है, ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी की भाई वो अकबर वाज बोर्न इन दिस, वाज डाइड इन दिस. ये ज्योग्राफी हिस्ट्री थोड़ी ना यार, या ज्योग्राफी थोड़ी ना है कि हाँ इंडिया कैपिटल दिल्ली है. इट्स अ थ्योरेटिकल, इट्स नॉट थ्योरेटिकल, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, राइट. मैथ्स था, तो मैथ्स में आप क्या करते थे, प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना. फॉर्मूला लर्न करना एक चीज है, तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ो और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो. ये मिस्टेक बहुत करते हैं बिगिनर्स, उसको प्लीज आप लोग करेक्ट करो. और प्रैक्टिस मोर देन व्हाट व्हेन यू आर लर्निंग, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. दैट्स द पॉइंट. Your advice for beginners is invaluable, sir. Thank you so much for sharing your insights on getting started and avoiding common mistakes. Now, moving further, I want to ask that how important is consistent practice in competitive programming, and how do you recommend participants to structure their practice sessions? Right, cool. This is a very really important, because in this loop of college hostel, college hostel, college hostel, and then sometimes we went for movies, sometimes we went for cafe, and then again back. You have to also watch web series. We have to also watch India versus Sri Lanka final. With lots of things there. So in that between, how you will find time for CP? How I found like find time for CP? The first thing is you have to make it interesting.
अगर आप उसको बोरिंग लेके करोगे कि भाई मेरे को सीपी करनी है प्लेसमेंट के लिए, मेरे को सीपी करनी है बस, मतलब करनी है, करना पड़ेगा, बीटेक कर लिया, तो ऐसे तो नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप इंटरेस्ट इन दैट. फर्स्ट थिंग इज डेवलपिंग इंटरेस्ट. हाँ, यू आर गेटिंग इंटरेस्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. First thing is that. Second thing is you have to manage your time. See, CP doesn't want much time. I'm not saying कि मैं दिन का 12 घंटे पढ़ता था. I will not give you a very emotional story कि मैं सुबह उठ के 6 बजे फिर मैं प्रैक्टिस करता था, फिर मैं खाना, ये नहीं है. मैंने भी दिन के 2-3 घंटे प्रैक्टिस की है, राइट. बट उसको आपको फ्रेम करना पड़ेगा. लेट्स से देखो, मैं एग्जांपल लेता हूँ. मान लेते हैं चलो आपका कॉलेज है, हॉस्टल है, सब कुछ है. चलो आप कॉलेज से 5 बजे आए, आपने 1-2 घंटे रेस्ट भी कर लिया. आपने सुबह से लेकर 7 बजे तक कुछ नहीं किया. मैं तो कह रहा हूँ 7 बजे तक आप अपना कॉलेज देख लो, कॉलेज के असाइनमेंट कर लो, रेस्ट कर लो, चिल कर लो, कुछ भी कर लो. स्टार्ट फ्रॉम 7 PM. वैसे या 8 भी मान लो, 8 से 10, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सीपीए कॉन्टेस्ट होता है कोर्ट से कोर्ट कोर्सेज पे. ठीक है, मोस्टली 8 से 10, 8 से 11 होता है. उसमें पार्ट लो. अराउंड 2 या 3 दिन होता है हफ्ते में, 2 और 3 टाइम्स अ वीक होता है, उसमें बांट लो. जिस दिन कॉन्टेस्ट ना हो उस दिन प्रैक्टिस करो. just you have to just give 2 or 3 hours per day to CP. That's all. And just for I will say 1 or 1.5 years. अगर आप इतना डिवोट करते हो तो एट द लास्ट यू विल कम अप विद अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. आपको वैसे पता नहीं चलता है, बट जब एट द लास्ट जब यू विल सी ना इम्प्रूवमेंट इन योरसेल्फ, यानी ओके हाँ इम्प्रूव तो हुआ है. तो जस्ट लाइक अगर आप दिन का 8 बजे से लेकर 10 बजे तक भी दे रहे हो ना रात में, उसके अलावा आप बाकी कुछ भी करो, कॉन्टेस्ट दो. 8 से 10 के बीच में कॉन्टेस्ट होता है, कॉन्टेस्ट पार्ट. जिस दिन कॉन्टेस्ट नहीं है उस दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नए कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, नई चीजें पढ़ सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो. और बाकी जब कभी छुट्टी है, वीकेंड है, तो डेवलपमेंट कर सकते हो, और भी चीजें करने को. तो जस्ट बट रेगुलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलरली करना. भले अगर लेट से आप आज बहुत बिजी हो, ठीक है, बहुत ज्यादा बिजी हो, डेट पे जाना है, पर तब भी आधे घंटे निकाल के एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर ही लो. मतलब क्योंकि रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. I appreciate your thoughts on the importance of consistent practice and structuring practice sessions. It's very helpful. Sir, what are the resources or platforms you would suggest for practicing competitive programming skills? सी सो सीपी का अगर हम बात करें, वो सीपी के जो टॉपिक्स होते हैं वो तो डीएसए वाले हैं ना. सीपी में भी स्ट्रिंग, एरे, डीपी, ग्राफ, ट्रीज, वही सब कुछ होता है. ठीक है, थोड़ा डिफरेंट होता है. Yes. तो टॉपिक्स तो सब वही हैं जो डीएसए में है. डीएसए का एक टॉपिक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आफ्टर दिस मीटिंग, वो आप शेयर करना स्टूडेंट के साथ में. अब बात करें प्रैक्टिस कैसे करनी है. देयर आर 2 वेज ऑफ प्रैक्टिसिंग. एज आई सेड, रैंडम प्रैक्टिसिंग, रैंडम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसका बेस्ट वे कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना. कॉन्टेस्ट में पार्ट करोगे, आपको नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको आप प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट बेस्ट वे टू प्रैक्टिस, कि आप कॉन्टेस्ट में पार्ट करो. भले ही मे बी इन दैट कॉन्टेस्ट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम, जस्ट प्रैक्टिस. उसे भाई एक भी प्रॉब्लम, द वर्स्ट यू कैन से इज नो. द वर्स्ट यू कैन डू इज कि एक भी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाओ, दैट्स ऑल. नेगेटिव में तो नहीं जाएगा ना कुछ. तो एटलीस्ट गिव अ कॉन्टेस्ट, राइट. एंड सेकंड थिंग इज सॉल्व टॉपिक वाइज क्वेश्चंस. देखो, हमें सीपी में क्या करना है, हमें पैटर्न्स बनाने होते हैं कि हाँ इस टाइप के प्रॉब्लम ऐसे होंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे. तो वो कब होगा, लेट्स से आपने बाइनरी सर्च पढ़ा, तो बाइनरी सर्च के कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 4-5 क्वेश्चन. कोर्सेज पे जाओ, बाइनरी सर्च टैग लगाओ, प्रैक्टिस करो, तो यू विल गेट अ पैटर्न. अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम्स जो है बाइनरी सर्च से होते हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग that I will recommend to practice. Participate in contests, practice regularly, solve topic wise questions, and up solve. Contest के बारे में up solve करना is very important. Just give me one minute. Sure. Yeah. Yeah. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Yeah. Yeah, so that's all how we can like practice. I appreciate your thoughts for the importance of consistent practice in structuring practice sessions. Thanks, sir, for recommending resources and platforms for honing competitive programming skills. This will be beneficial for our confidence. Moving ahead, I want to ask, sir, competitive programming often
involves making mistakes and learning from them. Can you share an example of challenging mistake you made and how you learned from it? Yeah, mistakes are there, and I will say mistakes are important also. If you not make mistakes, you will not learn. So because we learn from mistakes only, we don't learn from when we are like always. If every code will compile, how you will get to know about errors? So that's very important. Coming errors, coming mistakes, very important. We talk about myself. Lots of mistakes I have made. Okay, in start like in CP, बहुत सारे concepts होते हैं. We're not able to like get. There are multiple approaches of a problem. कि हमें approach कुछ और use करनी थी, हम कुछ और use कर रहे हैं. We struggle with the question. At the last, we know जब मैं किसी और का solution देखेंगे, तब अच्छा होगा ऐसे करना था. हम तो ऐसे कर रहे थे. तो ये बहुत important है. अगर आप सब कुछ सही करोगे, फिर सीखोगे कैसे? So mistakes and errors are really important. The only thing is always open your mind for new things to learn. Maybe like आप एक प्रॉब्लम में हो, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसमें आप चैलेंज फेस कर रहे हो, आपको बहुत एरर आ रहा है या फिर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो उसे, पहले तो अपना बेस्ट दो, गिव योर बेस्ट. उसका नहीं आ रहा है तो वॉच अदर सॉल्यूशन. देयर इज नो प्रॉब्लम इन वॉचिंग अदर्स और चेकिंग अदर सॉल्यूशन एंड एडिटोरियल्स. तो आप वो भी कर सकते हो, राइट? बट थिंग इज अब यार ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, मैंने गया, मैंने कॉपी पेस्ट करके कोड पेस्ट कर दिया और सबमिट कर दिया. कॉपी पेस्ट नहीं करना. ओके, आपका नहीं आ रहा है, आपने दूसरे का देखा, उससे समझा और फिर इम्प्लीमेंट किया और देखा आप क्यों नहीं कर पा रहे थे उसने जो किया है. दैट्स द थिंग. अगर आप ऐसा करोगे, फर्स्ट यू विल improve, right? I think the next question that's written like balancing practice with work or academics. I think I already covered that question, right? Like you have to just give maybe 2 hours per day. Okay, just give 8 to 10. If there is a contest, participate in that contest. If there's no contest, solve problems of lead code and GFT. That's all. You have to just give 2 or 3 hours per day, right? So your example for learning from challenging mistakes is enlightening. Thank you, sir, for sharing your experience. So, sir, can you share some specific projects or tasks you worked during your internship period that have been particularly challenging and how you overcame those challenges? There are a lot of the whole internship was challenging. मतलब, so obviously when we code like in college ना, in our college projects, so easy होता है यार, थोड़ा bug भी आ रहा है तो हम बस इसको deploy कर देते हैं and everything. But when we work for a big organization like LinkedIn, जहाँ पे आपका लिखा हुआ code millions of users को affect करने वाला है, तो you cannot make any mistake. Even a single mistake can happen. A lot of things. Okay, so you have to. So there was example जो मैंने कुछ चेंज किया था इन द डेटाबेस ऑफ लिंक्डइन एंड कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, 2 दिन तक वो साइट डाउन थी. सो नॉट लिंक्डइन, मेरा प्रोजेक्ट अलग था. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई फेस चैलेंजेस देयर. The only thing is how we can overcome it. Like first of all, don't be panic. That is what my team shared with me. So there was a time when I was very panicked because of my project was not working. My project went bad, but my team explained me, okay, don't be panic, Abhinav, and obviously this happens. Okay, the up and downs are there. That's the first thing. Overcome तो यही होता है. The overcome, how you can overcome is like obviously if you there's a problem, every problem has a solution. Okay? There will be a solution. Try to refix the thing. Maybe try to implement from the start. Okay, so there are a lot of like challenges happen. Like there were some technology. जैसे मैंने पहले React पे काम किया था. Ember does work on sorry, LinkedIn works on Ember. तो वहाँ जाके Ember को सीखना and everything. There were lots of things. But I think if you will upskill yourself, if you will deal with the problems, if you learn from the problems, that's the best way. Thank you, sir. Your experience with challenging tasks during your internship period and how you overcame them is inspiring. My next question from you, sir, is could you please tell us about your journey in competitive programming, including your most memorable competitions, and how you have managed to achieve a rank 57 in ICPC regionals? Right. So CP journey, I think I already told in the start. So from my second semester, I started CP. It's being like around 1 to 5 years, and in that 1 year, there are lots of challenges, lots of competition जहाँ पर क्वेश्चन नहीं होते थे. Then कुछ को इट्स लाइक कि बहुत अच्छे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, फिर अचानक से एक आ गया -100 हो गया, तो बिल्कुल ग्राफ नीचे चला गया. तो बहुत सारे अप डाउन होते हैं और जरूरी भी है होना, राइट?
So that's the thing. Most challenging coding challenge, I will say, कोड फोर्सेस के बहुत challenges थे जो challenging थे. There was a challenge जहाँ पे मैं एक क्वेश्चन नहीं कर पाया था when I was expert maybe. और किक स्टार्ट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा यार. मतलब आई डोंट नो किक स्टार्ट जो गूगल किक स्टार्ट था, और प्रॉब्लम्स आर इजी बट मेरा लक नहीं चलता था. मतलब वही सेम प्रॉब्लम्स मेरा कोड फोर्सेस पे चल रहा है. एंड इवन किक स्टार्ट में वो टाइम, एक तो किक स्टार्ट होता था या तो बहुत सुबह बिकॉज इट्स यूएस टाइमिंग राइट, या तो बहुत सुबह होता था, बहुत रात में होता था. बहुत रात में इट्स मोस्टली आई एम स्लीपी, बहुत सुबह मैं उठ नहीं पाता था. तो इट्स लाइक कि बहुत खराब जाता था मेरे कोड कोर्स वाले किक स्टार्ट कॉन्टेस्ट. वो काफी चैलेंजिंग था. कोड जैम बहुत चैलेंजिंग था, गूगल कोड जैम दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी. So yeah, there were like multiple challenging challenges. कुछ अच्छे बहुत होते हैं. There was a contest I know in in code forces which went very well. It's like कि मैंने बहुत बड़े बड़े CPRs को भी पीछे करा था उसमें. Even my whole college में काफी लोग इसमें थे. तो that time I was at the top of my friend list. So कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं. ICPC में तो यार ICPC guys were very, so we have a team of 3. We all 3 were expert in 5 star. So it's like कि 4 प्रॉब्लम्स आते हैं ICPC में. अगर आपने 3 भी कर लिए तो आप क्वालिफाई हो गए. तो हमारे 2 प्रॉब्लम्स तो हो गए थे. So एक मैंने किया था, एक तो सर ने किया था. We did do 2 problems. The third problem was very challenging, and अगर वो थर्ड ना होता तो हम क्वालिफाई ना करते. In the last half an hour we all 3 worked on the same problem. उसको solve किया, and in the last 10 minutes it was solved. And जब हमने बाद में रिजल्ट्स देखे तो इतना टफ प्रॉब्लम था कि उसको सिर्फ 50 टीम्स ने सॉल्व किया हुआ था. That is why we got a rank of top 50, like 57. So that's the thing. So that's a good example. अगर आप करते रहोगे तो हो जाएगा. So that's the thing. So your journey in competitive programming and achieving rank 57 in ICPC regionals is remarkable. Thanks sir for sharing your experiences and achievements. Sir, how do you handle imposter syndrome or self-doubt that many aspiring developers experience? Right. This is a very important point, and all of you must be facing this at some certain level of time. I Yes, also sir. faced this. Like there was a time कि as I told you कि ratings नहीं increase होती थी या कुछ. So I think no worries. होता है. Maybe at that time you can change the way how you are learning. You can change your approach towards your studying, right? So let's say time था जब मेरा भी there was my rating was stuck. I was like, I think I was specialist and 5 star, और उसके बाद मेरा rating नहीं बढ़ रही थी. तो that needs की थोड़ा change required होता है. Maybe अगर let's say आप बहुत सीपी कर रहे हो पर rating नहीं, तो मैं इसमें क्या कर रहा था that time I was just appearing contest. तो मैंने थोड़ा change किया. I started solving topic wise questions. I started lead code. I started development also. थोड़ा सा change के लिए, right? So there are some times जहाँ पे problems आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है. देखो obviously अगर आप सीपी नहीं करते हो, अगर आपका सीपी में अच्छा नहीं होता है, क्या इसका मतलब है कि प्लेसमेंट नहीं होगा? क्या इसका मतलब है कि कुछ हो नहीं पाएगा? अरे होगा भाई, तब भी होगा. जो लोग सीपी नहीं करते उनका भी अच्छा सा प्लेसमेंट होता है. तो उससे तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, राइट? कि मतलब कि भाई मेरी रेटिंग नहीं बढ़ रही तो क्या होगा. ऑलवेज डोंट बी पैनिक, टेक इट एज अ बिग थिंग. ओके ठीक है, चेंज योर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स. मे बी चेंज द थिंग, डीएसए कर लो, थोड़ा सीपी नहीं हो रहा तो लीड कोड कर लो, वहां थोड़ा टॉपिक वाइज कर लो, थोड़ा इजी प्रॉब्लम्स लगा लो, माइंड रिफ्रेश कर लो, डेवलपमेंट कर लो. जस्ट गिव मी 1 मिनट. Sure, sir. Hello. Yeah. Yes. So that's the thing. Just change the way of how you are doing the things, and that's all. Don't feel demotivated कि ये नहीं हो रहा तो क्या होगा. Change the way. कुछ और कर लो, डेवलपमेंट कर लो, कुछ और कर लो. Everything has scope, right? That's the point. Imposter syndrome and self-doubt are common challenges, and your insight on how to handle them will be valuable. Thank you, sir, for addressing this important topic. Your contribution to this discussion is greatly appreciated, sir.
Now it's time to our audience for questions. So I want to request our audience, if you have a question for our guest, please type it in the chat or you may raise your hand. So someone is saying on chat. Yeah, you guys can like, write your message on chat also. It's fine, whatever you guys wanted to ask. By the way, we covered multiple topics about CP in the PPT itself, but still you guys are like any Yes. other doubt, any personalized doubt. So you guys can for sure ask. Good evening, Divanshu. How to revise previous topics? Yeah, this is a good thing. So for previous topics, the very best way to revise na, just solve questions of that previous topics. Don't go for any notes or any specific thing कि okay ये क्या मतलब उसको पढ़ना है या कोई notes बना के रख लो. I will not prefer that. Notes are important, you can make that. But for revising any topic, I will prefer you to solve problems on that topic. Let's say आपको binary search revise करना है, तो just first quickly go through all the concepts of binary search, maybe from your notes or anything, and then you can go on code forces, select the binary search tag, and practice one or two problems, and then see will you be able to solve it or not. Right? That's the best way, I guess. I have a question. We have learned all concept for CP, or should so Tushar, you can't learn all concepts of CP. Even I don't know all the concepts of CPR. Lots of concepts. So this should not be the approach. The same thing लोग बोलते हैं DSA में भी that अरे भैया मेरे तो पूरा DSA हो गया है तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. DSA तो पूरा किसी का नहीं हो सकता है. DSA भाई लीड कोड में 2000 क्वेश्चन हैं, सारे हो गए क्या? नहीं हुए ना. तो पूरा DSA किसका हो सकता है? हाँ पूरे टॉपिक्स हो सकते हैं बट तो डोंट टेक इट इज लाइक मैं पहले पूरे टॉपिक्स कर लूंगा उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा. भाई तो मैंने अभी बोला स्टार्टिंग में कि जैसे ही कुछ करो साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है. जब तक प्रैक्टिस नहीं हुई है तब तक कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है. अगर आपने बाइनरी सर्च पढ़ लिया बस जाके वीडियो से या उसका आर्टिकल पढ़ लिया और उसके प्रैक्टिस नहीं किए प्रॉब्लम्स तो देयर इज नो मींस ऑफ बाइनरी सर्च. राइट? तो साथ साथ प्रैक्टिस करो. डोंट जस्ट कि पहले सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो. राइट टू सर? I have done an excellent level of DSA, but I lack development skills. My final year, but हाँ तो अगर तुमने DSA किया है उज्जवल, so you can like go on development part. I will always say कि at least 2 or 3 major projects of development should be there in your resume. ठीक है? तो अगर आपने करा हुआ है DSA अच्छा, तो आप development focus कर सकते हो. Start learning some backend, front-end technology, maybe React.js, Node.js, Python, whatever you want. It will hardly take 1 month to understand it, and then you can start making projects. Right? Still you have time, like if you're in final year, you can create projects. As a beginner, sometimes I can't solve problem or can't click logic. हाँ, अगर you, that is what I told Divyansu, okay, if you are not able to solve problems, if you're not able to click logic, there is no problem to watch solutions and editorials of others. The problem is don't copy paste it. It's completely total. अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है as a beginner, तो उसका solution देखो, उसका editorial देखो और समझो कि वो कैसे कर रहा है, आप क्यों नहीं कर पा रहे. That's completely fine. So watch other solution, learn from them. How to manage CP with dev. मैंने क्या बोला अभी मैंने बोला ना कि CP आपको कितनी करनी है. I will even not saying CP, सिर्फ CP नहीं बोल रहा मैं. I'm saying CP and DSA. For CP and DSA, you have to just devote 2 and 3 hours per day. Right? 8 to 10, 8 to 11, whatever time you have. Devote that for CP and DSA. बाकी जो भी weekends हैं, छुट्टियां हैं, apart like someday maybe you are not even good with, you are not having like in मन नहीं है CP करने का तो you can go on development. Right? So that's a part. कोर सब्जेक्ट्स लोग कॉलेज में भी होते हैं उज्जवल, तो कॉलेज के साथ आप करो मेरे ख्याल से. सारे DBMS कॉलेज भी कवर करता है. तो आई नो कॉलेज में कैसा पढ़ाते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट हाँ जब कॉलेज में टॉपिक हो रहा हो तो साथ साथ आप अलग से कर सकते हो ना कहीं और से, तो यू विल कवर. I mean, wanted in second, I wanted to know during your second year how you. I told ना आदित्य how I manage time. So देखो मेरा तो कॉलेज ऐसा सीन है कि मैं कॉलेज नहीं जाता था. Like my college very chill on attendance. There was no such criteria. But I will recommend even अगर आप 5 बजे तक कॉलेज में रहते हो तो मैं तो कह रहा हूँ 8 बजे से स्टार्ट करो ना.
हाँ वो तुमको थोड़ा सा नेटफ्लिक्स से टाइम कम करना पड़ेगा और कॉल कम करने का टाइम कम करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम कम देखना पड़ेगा, वो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। बट 8 से 10 के बीच में तुम कर सकते हो सीपी आराम से। आई गेस 8 से 10 8 से 11 किसी का भी बिजी नहीं होता टाइम। 8 बजे तक डिनर करके आराम से बैठ जाओ सीपी करने या डे से करने, राइट। दैट्स द बेस्ट वे टू लाइक डिवोट योर टाइम, राइट। तो सुबह देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 8 बजे के पहले तो टाइम आपका पूरा एकेडमिक्स का है ना। 8 के पहले आप कॉलेज के दो, जो करना हो करो, दैट्स ऑन यू। असाइनमेंट करो, कॉलेज करो, जो करो। मैं कह रहा हूँ बस 8 से 10 करो, दैट एवरीवन कैन डू, राइट। सर व्हेन आई डू डेवलपमेंट एट दैट टाइम आई एम एबल टू मैनेज। हाँ तो देखो वो तो आपको मैनेज करना होगा तेजस, मल्टीटास्किंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैनेज करना पड़ेगा डेवलपमेंट कितना करना है और सीपी कितना करना है, राइट। डेवलपमेंट में क्या, डेवलपमेंट देखो मैंने क्या बोला, डेवलपमेंट में क्या करते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो। तो प्रोजेक्ट्स आप साइड से बनाते रहो, वीकेंड्स में काम करो, छुट्टी में काम करो, जब और कभी मन नहीं है सीपी करने तब उसको करते रहो। बट सीपी तो आपको करनी है ना, वो तो आपको डेली टाइम देना है 1-2 घंटे उसको, तो वो चीज करो, राइट। तो मैनेज तो करना पड़ेगा, यही तो बात है सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग बट आफ्टर सम डेज एबल टू गेट सेम। हाँ तो वही ना प्रिंस, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है ना कि आपको इवन डीपी वगैरह जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, मैं खुद एक प्रॉब्लम को 2-3 बार सॉल्व करता हूँ तब मेरे को समझ में आता है। तो द थिंग इज कि प्रॉब्लम सॉल्व ना करो, बस उसका एक पैटर्न समझो कि अच्छा ऐसी प्रॉब्लम ऐसे करते हैं, सो दैट और खुद से करो, ट्राई टू डू इट बाय ओन। नहीं आ रहा है सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देके फिर से खुद से करो, राइट। तो टाइम तो लगेगा, 1-2 आइटरेशन लगेंगे, एक बार में नहीं होता, बार में तो किसी का नहीं होता ना। तो टाइम लगता है, 2-3 आइटरेशन लगते हैं, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हाँ इंपॉर्टेंस ऑफ सीजीपीए होता है यार, बट प्रभात आई विल से ऑफ कैंपस में इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है सीजीपीए का, बट ऑन कैंपस प्लेसमेंट में तो इंपॉर्टेंस होता है। तो एटलीस्ट 7.5-8 के आसपास तो रखो यार। आईसीपीसी पार्टिसिपेट करने का आई गेस अभी फॉर्म अभी कुछ आने वाले को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आईसीपीसी के साइट पे। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन लाइक सर्च फ्रॉम यूट्यूब वगैरह कि कैसे रजिस्टर करें आईसीपीसी में, एंड यू विल गेट इट, राइट। एनीथिंग एल्स गाइस? I'm not able to. I'm able to solve the question in my content, but it makes very. It takes my whole concentration. हाँ तो वही है ना अंकुश की वो इंक्रीज करने के लिए मॉक कॉन्टेस्ट दो, उसको क्या बोलते हैं वो जो सेम कॉन्टेस्ट को आप क्लोन करके दे सकते हो ना, वो कॉन्टेस्ट दो, प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट दो, राइट। तो दैट्स द वेरी बेस्ट वे कि लेट्स से आपको 3 प्रॉब्लम करने में 3 घंटा लग रहा है, 2 घंटा पूरा पूरा लग रहा है, तो ट्राई टू इंक्रीज दैट। सो लेट्स से आप एक काम करोगे, जिस थर्ड वाला जो प्रॉब्लम होता है कोड फोर्सेस का, वो अराउंड 1400 से 1600 लेवल का होता है, राइट। तो आप 1400 से 1600 लेवल में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करो बहुत ज्यादा, जिनकी रेटिंग 1600 के आसपास हो या 1400 के आसपास हो, और आप क्यों टाइम दे रहे हो, सो इंप्रूव करो उस टाइम को। दिस इज ऑल यू कैन इंप्रूव, राइट। सो आई विल रिकमेंड आपकी जो भी रेटिंग है कोड फोर्सेस की, उसमें प्लस 200 रेटिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो आपकी रेटिंग 1200 है, तो आप 1200 से 1300 या 1400 के क्वेश्चन सॉल्व करो। आपकी रेटिंग 1400 है, तो आप 1400 से 1600 के क्वेश्चन सॉल्व करो, इस तरीके से सॉल्व करो, राइट। देन योर टाइम विल इंप्रूव। अब ऐसा नहीं कि आपकी रेटिंग तो 1400 है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो 800 के, तो भाई उसमें कोई मतलब नहीं ना, कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, ठीक है, दैट्स अ पॉइंट। So before you take someone else's question, I personally need to ask you a question. It is currently in my first year I practiced on CodeChef, then I moved on Codeforces. So right now मतलब CP के लिए as such कुछ खास मतलब टॉपिक नहीं पढ़ा था, बस जो इम्प्लीमेंटेशन ग्रीडी जो भी आते गए उसको सॉल्व करते गए और फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम से सीखता रहा। बट अब ऐसा होता है कि लाइक रैंक धीरे धीरे बढ़ती तो है, बट मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, एक तो जैसे अभी अंकुश ने भी बताया कि इट टेक्स टाइम, तो टाइम को कम करने का तो यही उपाय है कि मतलब प्रैक्टिस की जाए। बट मतलब किस फ्लो में मतलब टॉपिक्स को भी कवर करें ताकि जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो पाए। मतलब दैट इज व्हाट आई टोल्ड कि जब मेरा भी एक बार एक टाइम पे स्टक हो गया था एक लेवल पे रेटिंग पे, तो मैंने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया था। क्योंकि जो लोग रैंडमली स्टार्ट करते हैं, जैसे तूने बोला कि तूने भी स्टार्ट करा सॉल्व करना, जैसे टॉपिक आते रहे तुमने उसको करते रहे, सेम मैंने भी किया था। मैंने भी रैंडमली स्टार्ट किया था सीपी करना, और जैसे जैसे होता रहा करते रहे, एक टाइम आता था वो अटक जाता है। तो उस टाइम पे प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज की, जैसे कि प्रैक्टिस, जैसे कि बाइनरी सर्च है, तो बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस की स्पेसिफिक प्रैक्टिस कर लो, 10-12 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बाइनरी सर्च के प्रैक्टिस कर लो। मतलब बाइनरी सर्च क्वेश्चन तुमको पैटर्न पता चल जाएगा।
तो अगर कॉन्टेस्ट में कोई बाइनरी का पैटर्न क्वेश्चन आता है तो आपको पता होगा कि अच्छा हाँ मैंने बाइनरी क्वेश्चन किए हुए तो ऐसे होते हैं, यहाँ भी वही लगेगा। तो वो एक टाइम पे आके वो होता है प्रॉब्लम। तो आई विल सजेस्ट इस टाइम पे कि आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, बाइनरी सर्च कर लो, सॉर्टिंग कर लो, डीपीए कर लो, या जो भी आपने करे ग्रीडी कर लो अलग से प्रॉब्लम, ताकि आपको टॉपिक वाइज थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ ऐसे तो देखो कॉन्टेस्ट में सबसे टाइम कहाँ आता है ये सोचने में कि इसको कैसे करेंगे, टॉपिक क्या होगा। तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होते हैं, क्या ये तो बाइनरी सर्च से होना है। तो जब तक आप टॉपिक वाइज नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक चीज है आई गेस। तो अगर वो चीज आप करते हो तो फिर इट विल बी वेरी फाइन, राइट, इट विल बी वेरी गुड। और लीड कोड भी करो यार, लीड कोड भी करते रहो साथ साथ, क्योंकि देखो कुछ टॉपिक जैसे लिंक लिस्ट है और जो ग्राफ ट्री का वो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना पॉइंटर्स वाले, वो नहीं होते सीपी में, और वो भी पूछे आते हैं इंटरव्यूज में, तो उसको भी अलग से प्रैक्टिस करो, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सर जैसा आपने कहा कि वी नीड टू प्रैक्टिस टॉपिक वाइज एंड आल्सो यू सेड कि हमको वर्चुअली कॉन्टेस्ट देना चाहिए टू इंक्रीज स्पीड। तो इसमें टाइम को मतलब कितना रेशियो में डिवाइड करना चाहिए कि आप एक टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो टॉपिक वाइज करो और वर्चुअली कॉन्टेस्ट देके करो? इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर लाइक इट्स सब्जेक्टिव। आपको लग रहा है कि हाँ आपने लेट्स से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए टॉपिक के 5-10 क्वेश्चन, आपको लग रहा है हाँ अब मैं गुड लेवल पे आ गया हूँ कि हाँ मैंने जो है इसके इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सो अच्छा लेट्स गिव अ कॉन्टेस्ट तो लेट्स चेक टेस्ट इट, राइट। तो वो डिपेंड्स सब्जेक्टिव। आपको पता होगा ना कि आपने कब कितना कर लिया, कि आप कब। बेसिक थिंग इज कि आप दिन के लाइक अगर 2-3 घंटे देते हो, जिस दिन कॉन्टेस्ट उस दिन सिर्फ कॉन्टेस्ट करो उसको आप सॉल्व करो, जस्ट इन्वेस्ट टाइम ऑन दैट। और जिस दिन कॉन्टेस्ट नहीं है तो यू फील अच्छा आज कॉन्टेस्ट नहीं है, आज मे बी हम एक वर्चुअल कॉन्टेस्ट दे सकते हैं, मे बी मैं आज बाइनरी सर्च कर सकता हूँ, मे बी आज मैं ग्रेडी कर सकता हूँ, स्लाइडिंग विंडो कर सकता हूँ, 2 पॉइंट्स कर सकता हूँ, राइट। सो दैट्स द पॉइंट। सो इट्स लाइक ऑन यू व्हाट। As a beginner, how much time I should go on particular question? So give your best basically, right? Don't invest much time. Like let's say if you are investing some time on the question and now you feel you have like did whatever you can, you have implemented all your thoughts, अब तो नहीं हो रहा है, तो उसके बाद you can still search the tutorial, right? So give your best. अब let's say अब एक प्रॉब्लम है, let's say अब एक प्रॉब्लम है रिकर्जन का, आपको रिकर्जन आता ही नहीं है, तो उसमें कितना भी टाइम दे दो you will not get it. तो एक टाइम के बाद में मे बी 15 मिनट आधे घंटे के बाद में जब आपको लगे कि हाँ अब तो बहुत हो गया, अब तो नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन गो लाइक ऑन चेकिंग द ट्यूटोरियल और समथिंग। मे बी वो कॉन्सेप्ट ही आपने ना पढ़ा हो, मे बी आपको क्लिक ना कर रहा हो, तो इट्स टोटली फाइन टू शेयर ट्यूटोरियल्स आफ्टर गिविंग योर बेस्ट, बट डोंट कॉपी इट, लर्न फ्रॉम इट, ओके। सर ऑफन इट हैपेंस कि जैसा आपने कहा कि आफ्टर सर्टेन अ टाइम दैट वी कैन फिक्स, सपोज कि हमने इसको 45 मिनट्स देने हैं प्रॉब्लम को और उसके बाद हम एडिटोरियल देख लेंगे, राइट? तो ऐसा भी होता है कि आवर माइंड ट्राइज टू ट्रिक अस कि मतलब ये तुमसे होगा ही नहीं, इट हैपेंस। तो मतलब don't हाउ टू is अवॉइड like कि दैट? don't do is like कि give 45 minutes, do it like okay I will try, don't fix the time पहले, otherwise you will try to spend that 45 minutes and then watch the tutorial, so don't do that। always let's say आपने प्रॉब्लम पढ़ा, आपको उसने पढ़ा, आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, अच्छा पहले प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट से समझ लो, बहुत सोचो नहीं आया, मे बी उसको होल्ड पे रख दो, माइंड पे आपके होल्ड पे, आप अगली प्रॉब्लम में चले गए, कुछ और करने लगे, कॉलेज काम करने लगे, डेवलपमेंट करने लगे, दैट प्रॉब्लम इज रनिंग, मे बी आपको क्लिक कर जाए सोचते सोचते ऐसे ही, मे बी जब दोबारा आओ उसके पास तब क्लिक कर जाए, तो ट्राई टू मेक इट ऑन होल्ड ऑल्सो, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम आपके माइंड में रहती है, आप सोचते हो, तो सोते होते सो रहे हैं क्लिक कर गया, उठ के कोड करने लगे, मीम था ना, तो मतलब वही है, हो जाता है कभी कभी कि सोचते सोचते कभी कभी क्लिक कर गया लॉजिक। मेरे साथ भी होता है कि मान लो लास्ट कॉन्टेस्ट में कोई क्वेश्चन आया, मैंने बहुत ट्राई किया, पूरे कॉन्टेस्ट नहीं हुआ, मैं बनरेस हो गया, और सुबह उठा अचानक से क्लिक करके चमक गया, भाई अरे अच्छा ऐसे करना था, तो हो जाता है वो, है ना। तो एक तो टाइम ना फिक्स करो कि नहीं मैं 15 मिनट में प्रैक्टिस करूंगा, जब तक लग रहा है प्रैक्टिस करो, होल्ड पे रख दो, ठीक है अब मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा या कल देखूंगा, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा, ऐसा कर सकते हो। एंड सर अगर जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर अप्रोच व्हेन यू सी अ क्वेश्चन, मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ पढ़ के नहीं समझ या आता, कभी कभी हम सैम्पल टेस्ट के से हिंट्स लेने पड़ते हैं कि अच्छा इसमें ये पैटर्न दिख रहा है तो ऐसा ट्राई करके दिखते हैं। सो व्हाट शुड बी द एक्यूरेट और आइडियल प्रोसीजर कि आप ऐसे ऐसे करो फर्स्ट इसको? पार्ट, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज दैट
कि आपको प्रॉब्लम को समझना है यूजिंग टेस्ट केस, यूजिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाटएवर, बट प्रॉब्लम शुड बी कंप्लीटली, इट्स नॉट लाइक कि आपको प्रॉब्लम पार्शियल क्लियर है आप कोड करने चले गए। तो पहला स्टेप हमेशा होना चाहिए प्रॉब्लम 100% क्लियर हो, बिकॉज में आपका टाइम बचेगा। लेट्स से आपने पार्शियली प्रॉब्लम समझा और कोड करने चले गए, फिर देखा रहे तो ऐसे हो ही नहीं रहा है, फिर दोबारा आया, फिर नया कोड लिखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कंप्लीटली। उसके बाद फिर ये ऑब्जर्व करो क्या पैटर्न है, कि बाइनरी सर्च से हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्या हो सकता है, एक पैटर्न बनाओ। तो पैटर्न कैसे आता है, जब आप पहले ब्रूट फोर्स लिखते हो तो पहले भले उसका ब्रूट फोर्स सोचो, अच्छा ब्रूट फोर्स कैसे होगा, अच्छा 2 लूप लगेंगे, ये होगा वो होगा। फिर जब ब्रूट फोर्स सोच रहे होते हैं ना, तब आपको उसका आइडिया कभी भी क्लिक कर जाता है। जैसे इंटरव्यू में जब मेरा लिंक्डइन का इंटरव्यू था, पहला प्रॉब्लम तो मेरे लिए इजी था, मैं कर चुका था। दूसरा प्रॉब्लम हार्ड था लीड कोड का, तो वो मेरे को बिल्कुल नहीं आता था। तो मैंने उसको ब्रूट फोर्स करना स्टार्ट किया, और ब्रूट फोर्स करते करते फिर मेरे को क्लिक कर गया कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, तो फिर मैंने वो किया। तो दैट शुड बी अ प्रॉब्लम अप्रोच, कि पहले आप उसको समझो पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर उसका ब्रूट फोर्स जो क्या होगा, एंड देन थिंक फॉर द पैटर्न, ऑब्जर्व यहाँ और अच्छे से कैसे करते हैं, एंड देन इम्प्लीमेंट। Yes, thank you, sir. And one last question, sir. Uh, mm, सर लास्ट क्वेश्चन ये कि लाइक लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में जब मैं था, सो कोड शेफ का ही मतलब इवेंट था, जिसमें मतलब वो आईसीपीसी के थीम पे बेस्ड था, जिसमें वी वर इन अ टीम ऑफ 3, राइट? तो वहाँ मैंने एक और फर्स्ट टाइम था कि हम टीम्स में ऐसे मतलब सीपी कर रहे थे, एंड आई डिस्कवर्ड कि ऐसा कई बार होता है कि जब आप टीम में बैठे होते हैं तो आप पीयर प्रेशर होता है कि आप मतलब अपना हो सकता है थॉट आप दबा दें, जो कि सही सॉल्यूशन की तरफ जल्दी ले जा सकता था, या फिर ऐसा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम बहुत टफ दिखती है बट वो ब्रूट फोर्स में हो जाती है, बट क्योंकि सब लोग एक अच्छी सीपी करके आ रहे हैं तो कोई ब्रूट फोर्स को मतलब उतना भाव नहीं देता, बट ऐसा होता है समटाइम्स कि ब्रूट फोर्स वर्क्स। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। सो मतलब अपने टीम में कोऑर्डिनेशन कैसे मतलब आप स्टैब्लिश किया जब आप व्हेन यू वर इन आईसीपीसी? डोंट सो देखो, मेरे टीम में भी एक सीनियर थे, ठीक है, वो ऑब्वियसली मोर एक्सपीरियंस देन अस, उन्होंने ज्यादा कर रखा था सब कुछ। बट आई डोंट थिंक कि आप को ऐसा रखना चाहिए कि यू हैव टू लाइक पीयर प्रेशर इज नथिंग इन टीम। टीम में कोई पीयर प्रेशर नहीं होता है, राइट? पीयर प्रेशर कैन बी बिटवीन द कॉलेज, लाइक आपके क्लासमेट्स के बीच में हो सकता है कि हाँ वो अच्छा कर रहा है, बट एज अ टीम अगर आप काम कर रहे हो देन देयर शुड नॉट बी अ पीयर प्रेशर की अरे ऑब्वियसली अगर दूसरा बंदा आपसे ज्यादा जानता है, वो आपसे ज्यादा कर चुका है, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा आता होगा। So always give your points, always suggest your topics also, participate in their conversations, not don't feel yourself कि मेरे को मतलब हाँ you know आपको ठीक है उससे कम आता है, या you are junior in that team, but always have a will to keep your points there, participate in their discussion। it's not like कि आप whatever you feel, तो वो टीम में करते हम लोग क्यों हैं, ताकि हम लोग आपस में अपने थॉट्स शेयर करें, और फिर जिसको नहीं आता उसको चीज पता चले। जब तक आप अपने थॉट्स नहीं शेयर करोगे, मान लो एक क्वेश्चन है तो चलो आपको लग रहा है ब्रूट फोर्स से होगा, उनको पता नहीं होगा, एटलीस्ट बोलो तो आपको बताएगा अच्छा ब्रूट फोर्स से नहीं होगा भाई, ऐसा है। इन अ गुड टीम ऑलवेज अगर आपको कोई एक बंदा गलत करता है तो दूसरे मेंबर उसको समझाते हैं, बताते हैं ऐसा क्यों गलत है। दैट इज व्हाई विद टीम कॉन्टेस्ट आर देयर, टीम बॉन्डिंग इज देयर, राइट? तो ये अभी नहीं है तो बाद में भी होगा, बाद में भी जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे आपकी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होंगे, आप जूनियर एज अ जूनियर ज्वाइन करता सब लोग, तो वहां भी आपको सेम जगह वहां आप ऐसे बैठ जाओगे कि नहीं मैं तो कुछ कंट्रीब्यूटिंग मतलब मेरे को तो आता ही नहीं भाई, तो फिर आपको हमेशा पार्ट लेना है हर चीज में। गलत होगा तो आपको बताया जाएगा। डोंट थिंक इट एज अ पीयर प्रेशर, इन अ टीम इज नो पीयर प्रेशर, राइट? राइट सर। तो सर जब जब जैसे आपकी टीम थी तो मतलब अगर जैसे सपोज इजी लेवल क्वेश्चन आया या किसी को क्लिक कर गया, बाकी 2 लोग उस पे हो सकता है सोच भी रहे हो, तो मतलब आप पहले उसको डिस्कस करते थे फिर उसको सॉल्व करते थे कि जिसको आइडिया आ गया एंड ही स्टार्ट्स इम्प्लीमेंटिंग इट? देखो, जब टीम में होता था तो वी मोस्टली डिवाइड क्वेश्चंस, कि लेट्स से 2-3 बंदे लेट्स से टीम में, तब एक अब वी नो ना कि किसकी सबसे अच्छी किसकी कम अच्छी, वो सबको पता होता है। तो लेट्स से जो सबसे छोटा वाला जिसको सबसे कम आता है तीनों में से, तो वो उसने सबसे इजी क्वेश्चन लगाया, उसके बाद उसने उससे बेटर लगाया, जो सबसे बड़ा एक्सपर्ट कैंडिडेट मास्टर उसने सबसे सबसे हार्ड क्वेश्चन लगाया, ठीक है? तो सब पहले क्वेश्चन डिवाइड कर लो, सबको एक क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग, कि मेरे को कम आता है मैं इजी क्वेश्चन लाऊंगा, तुम वो लगा लो डिवाइड कर लो। हमने ये किया था सीपी में, लाइक जो पहले 2 क्वेश्चन होते हैं वो यूजुअली मीडियम होते हैं, तो वो ठीक है, वो मैंने बोला वो मैं कर लेता हूँ, तो सर कर लेता है, ठीक है चलो ठीक है अच्छे क्वेश्चन है। बहुत हार्ड क्वेश्चन था तो मैं कहा सर आप कर लो, तो वी डिवाइड क्वेश्चन।
अब जब हम लोग वो क्वेश्चन कर चुके होते हैं, अब मे बी कोई बंदा है जिसका क्वेश्चन से नहीं हो रहा है, आपने अपना कर लिया है, अब you go for help for others, बताओ okay your question is not happening, तब you can like both can work on a single question, या कुछ और क्वेश्चन है उस पर काम कर सकते हो. तो इट्स नॉट लाइक कि तीनों को बैठ के ही क्वेश्चन पे काम करना है, वो सही अप्रोच भी नहीं है. सो अपने अपने पे करो, किसी का हो गया अच्छी बात है, हाँ कोई बिल्कुल अटक गया किसी क्वेश्चन पे नहीं हो रहा है, तब उसकी हेल्प करो जाके. इट शुड बी लाइक दैट. जैसे कि मैंने क्या बताया कि 4 क्वेश्चन थे, 2 हम लोगों ने कर लिए थे, तीसरा बहुत टफ था, तो फिर तीनों लोग बैठ के तीसरा करने बैठ गया, तब वो हुआ. तो समथिंग लाइक दैट. That was all. Thank you so much, sir. At last, I would request you to give a message for all our attendees from your side. Yeah, the only message is, guys, I know the situation is very bad currently. For you guys, maybe it's not, because you guys are in your first and second year, right? But Right, if we will sir. talk about, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So, but if we talk about the current scenario for third and fourth year students, opportunities are very low, internships नहीं, jobs नहीं है. तो कभी भी इससे डिमोटिवेट मत होना. ऑलवेज आप इसके लिए और अगर हमेशा आप इसके लिए करोगे, अपना रिज्यूमे बिल्ड करोगे, अपनी स्किल्स बिल्ड करोगे, सो इट्स ऑलवेज बेटर फॉर यू गाइस. सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप कोडिंग, प्रैक्टिस करो, पार्टिसिपेट करो कॉन्टेस्ट में, डिमोटिवेट ना हो, गलतियों से सीखो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. दैट्स ऑल व्हाट आई विल से. एंड इन्वेस्ट टाइम. ओके, टाइम लगता है, it will take time, it's not a 1 or 2 month thing, it takes years, but you have to devote it, right? Apart from that, if you guys have any questions, like you guys can connect with me on LinkedIn and Telegram में भी मैंने link share किया था. So the Telegram link, Yes, you sir. can join. वहाँ पर I post resources and everything on my Telegram, that you guys can join. Apart from that, if you guys have any questions or anything, you guys can like ask me on LinkedIn or Twitter, whatever. So that's the point. Just keep practicing, yeah, keep coding, and learn from mistakes. Don't be demotivated. That's some point that I wanted to say. Thank you, sir. Thank you to everyone who joined us today for our webinar. We hope you found today's session informative and engaging. A heartfelt thank you to our guest, Abhinav Awasthi sir, for your time, knowledge, and generosity in sharing your expertise and experiences. Your insights have been truly valuable. Additionally, I'd like to extend my gratitude to our audience, both for your participation and your thoughtful questions. Without your engagement, this webinar would not have been as enriching as it was. Do not forget to stay connected with us on our social media handles, which are being displayed on the screen. We have more exciting events coming up. Whether you are a seasoned programmer or just beginning your journey, keep coding, keep learning, and keep pushing your boundaries. With that, I'll officially conclude today's webinar. Please feel free to reach out to us with any further suggestions or questions. Until next time, goodbye, everyone. At last, sir, thank you so much. I would like to request you to please send any suggestions or material, like you said in the starting. You'll send a tree Yeah. of I will topics. send that topic tree, and the questions and everything with you guys. Okay. After this Okay. session, by today, give me some time. Maybe it will be late. So by today, I'll send that Sure. all. Okay. Sure. Okay. Thanks, guys. Thanks for inviting me. Sure, It sir. was great. Thank you. Thank Hope you, this sir. session was effective. Thank you so Thank much, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. So, as the event is over, so now all of you can leave the meeting.